डू वी रियली नीड लिटरेचर इन आवर लाइफ्स? क्या वाकई हमें अपनी ज़िंदगियों में अदब या लिटरेचर की ज़रूरत होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, आई एम मोहम्मद बिलाल and you are watching my YouTube channel. Today in this video I am going to tell you about the importance of literature. हम देखेंगे कि क्या वाकई जो है अदब की हमारी ज़िंदगी में इतनी अहमियत है कि इसको पढ़ा जाए, या इसकी हमारी ज़िंदगियों में क्या इतनी सिग्निफिकेंस है कि ये हमारी ज़िंदगियों को बदल के रख दे, या इसकी क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो हमें जो है वो एक बसारत अता करें, हमारी इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग करें, हमें एस्थेटिक प्लेजर दें. So we will see these things in this video. So let's start. So when we talk about the significance or importance of literature, we come at the point that literature is the mirror of life. Literature represents life. So when we say that it is a mirror of life, it means that it is very significant, it is very important because it represents or it projects every aspect of life. हमें ज़िंदगी के हर शोबे के बारे में बताता है, ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार या इस दुनिया के जितने भी जो है मुख्तलिफ दौर गुजरे हैं, हिस्ट्री के बारे में हमें बताता है, उन फैक्ट्स के बारे में बताता है जिनको जान के जो है वो हमें बहुत ज़्यादा जो है वो विजन बसारत मिलती है, एक क्रिटिकल अप्रोच डेवलप होती है, और मुख्तलिफ एजेस के जो सर्कमस्टांसेस हैं, उनका लाइफ स्टाइल, उन सब के बारे में पता चलता है. तो जब लिटरेचर जो है वो ज़िंदगी को रिप्रेजेंट करता है, सोसाइटी के लिए एक मिरर के तौर पे काम करता है, तो इट मीन्स दैट इट इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. तो इसको जो है वो हम अपनी ज़िंदगी से निकाल नहीं सकते हैं. मेरे ख्याल में इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट important part of our life. Second जो है वो we see that it has some utilitarian and aesthetic purposes. अब जो यूटिलिटेरियन है उसमें हमारी ज़िंदगी से मुतल्लिक है, मॉरल लेसन देता है, विजन देता है, दिस एंड दैट. बट व्हेन वी टॉक अबाउट एस्थेटिक पर्पस, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, जिसमें जो है वो आर्ट फॉर आर्ट से मूवमेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे फोकस दैट आर्ट मस्ट convey aesthetic pleasure. It gives some aesthetic peace and calm rather than any utilitarian purpose. तो हम इसके जो है वो significance, इसके purpose को दो ends में जब हम divide करते हैं, then we come at different other points. First of all, it gives us aesthetic pleasure. हमें जो है वो एक aesthetic सुकून मिलता है जब भी हम literature पढ़ते हैं, poetry पढ़ते हैं, कोई novel पढ़ते हैं. It gives us aesthetic pleasure. So in that way literature is very important. Secondly, it makes our vision broader. ये हमारे विजन को ब्रॉड करता है, हमें एक बसारत देता है. For example, in Pakistan movement you can see the poetry of Iqbal. Iqbal's poetry is very important because it gave Muslims a vision. इसी तरह इंग्लिश लिटरेचर में भी है, पर्शियन लिटरेचर में भी है. इन एवरी लिटरेचर देयर आर मैनी राइटर्स हु गेव द विजन थ्रू लिटरेचर. अब लिटरेचर जो है वो जब हम पढ़ते हैं, एवरी स्टूडेंट्स मेक हिज विजन ब्रॉड. अब जो राइटर है उसकी जो है वो कैपेसिटी, मेंटल अप्रोच, इट इज़ डिफरेंट. सो इट यू कैन से दैट इंटेलेक्चुअल ग्रोथ इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ लिटरेचर. एंड नेक्स्ट इज इमेजिनेशन. लिटरेचर पढ़ने से जो है वो इमेजिनेशन को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो यू कैन से दैट ग्रोथ मिलती है. जिनकी इमेजिनेशन हाई होती है वो बहुत ऊंचा सोचते हैं. और आप देख सकते हैं रोमांटिक लिटरेचर दैट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन इमेजिनेशन. तो जिन लोगों की इमेजिनेशन अच्छी होती है, दे थिंक वेरी हाई, दे हैव ग्रेट विजन्स, दे हैव ग्रेट एम्स. तो अच्छा एम, अच्छा मकसद लेने के लिए अच्छी बसारत, अच्छी जो है इमेजिनेशन चाहिए. एंड इट इज़ गिवन बाय लिटरेचर. लिटरेचर गिव्स अस दैट अपॉर्चुनिटी. आइडियलिस्टिक अप्रोच.
लिटरेचर की जो बहुत बड़ी खूबसूरती है दैट इट गिव्स अस एन आइडियलिस्टिक पिक्चर ऑफ लाइफ। लिटरेचर रिप्रेजेंट्स लाइफ इन वेरी आइडियलिस्टिक वे। जो बुक्स हैं, मूवीज़ हैं, उनमें एक आइडियल पिक्चर होती है, सो यू कैन फॉलो दैट। एक आइडियल पिक्चर भी तो होनी चाहिए ना लाइफ की जिसको हम फॉलो कर सकें। सो इन दैट वे लिटरेचर इज सिग्निफिकेंट। देन एंटरटेनमेंट, यू सी मूवीज, ड्रामाज, दीज आर ऑल important things because they give us entertainment in the time of difficulty, in the time of boredom, in the time of you can say absurdity. Then critical approach. Whenever we study novel, drama or any other literary piece, we develop our critical thinking, we develop our critical approach, we critically analyze the characters, we critically analyze the approach, ideology, ideas, thought. So in that way we develop our critical approach. Then there is catharsis. Catharsis is one of the beautiful element that is provided by literature, that it gives us emotional relief. Then literature is a time machine. Only literature can bring you or can give you an opportunity to go into past, present, remain in present or in future. तो ये हाल, माजी और मुस्तकबिल में जाने की जो काबिलियत या सलाहियत है वो सिर्फ अदब देता है। अदब हमें माजी में भी ले जाता है, मुस्तकबिल में, फ्यूचर में भी ले जाता है। देन इट एक्सपेंड्स द हॉरिजन। फिर वही विजन की बात, एक इंसान की जो है सोच को जो है वो तकवीयत देता है। यूटिलिटेरियन पर्पस में जो है वी कैन सी दैट इट गिव्स अस मॉरल लेसन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर लिटरेरी पीस में कोई ना कोई मॉरल लेसन होता है, सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। देन देयर इज इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल ग्रोथ। हर बंदा जो लिटरेचर का स्टूडेंट है, जो लिटरेचर को पढ़ता है, उसकी जो है वो ग्रोथ ज़्यादा होती है, इमोशनल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। यू फील फॉर अदर। आप गरीबों के लिए सोचते हैं, आप दुखी लोगों के लिए सोचते हैं, आप किसी के साथ ज्यादती नहीं करना चाहते। वाई? बिकॉज ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर अफेक्ट्स यूर इमोशनल कैपेसिटी। उसके बाद जो है लिटरेचर गिव्स यू मोटिवेशन। पालो किलो का जो है वो द एल्केमिस्ट पढ़ लें, इट इज़ अ बिग मोटिवेशन फॉर ऑल। द ओल्ड मैन एंड द सी, it is one of the best motivational novel. So literature gives motivation, it gives aesthetic pleasure, it gives moral lesson, it makes our vision broad, it focuses on our imagination. So in that way literature is very important, it is highly significant, it has greater importance in our life. So that's why I think that literature is very necessary in our lives and we need literature in our lives. If you think otherwise, you can comment. If you disagree, you can have your own arguments. But in my opinion, we need literature in our lives. If you like video, please like, comment and share. Thank you.